Nathuram Godse killed Gandhiji at a prayer meeting in Delhi on January 30, 1948, and was hanged for the crime, which he told the court was an act of high patriotism. At another level, Godse has defeated Gandhi again and again, notably in Delhi in 1984, in Ayodhya in 1992, in Gujarat in 2002, and injuriously in Delhi in 2014. Other battles, in Nelli, Muzaffarnagar, Kandhamal, Hashimpura, the list never ends, also saw Gandhi being assassinated repeatedly. But Gandhi is also invincible, and keeps coming back to continue the fight despite being defeated or being killed. Asghar Wajahat wrote a play 10 years ago in which Gandhi survives Godse's bullets and lives to defeat him finally, through dialogue. In the play Godse at Gandhi.com, Gandhi recovers from his bullet injuries and Godse goes to jail. Gandhi becomes a fighter against terrible atrocities that helpless people continue to face in independent India. For this, he is sentenced to prison, and he opts to be lodged in the same cell as Godse. Their dialogue makes up the essence of Wajahat's play. It was adapted recently as a movie. The director, Rajkumar Santoshi, wrote the screenplay with Wajahat and called it Gandhi-Godse, Ekyud, which translates as a battle between Godse and Gandhi. The battle was one of ideas, of course. The actors were all unfamiliar faces, though some were seasoned stage veterans. Chinmay Mandalkar made a powerful Godse, which would make Pathan or Tiger characters look like robots. Mandalkar went to the National School of Drama, the institution where seasoned actors like O.M. Puri and Naseeruddin Shah received their training. It shows. Mandalkar's lines are sharp and rooted in driven nationalism. Godse's strong character is possibly what some of Wajahat's intellectual friends disapproved of. The movie has striven to move away from the tradition of labeling villains and heroes in black and white, something Hollywood war films would do with German soldiers. Then, Steven Spielberg made a hero of a Soviet spy in Bridge of Spies, not ignoring the reality that human beings can be flawed. That apart, the dialogues given to Deepak Antony playing a superlative Gandhi are winners, each one of them. His diminutive form makes a perfect foil for the muscular Godse. For example, in the prison cell, Godse has drawn a map of his idea of Akhand Bharat, Hindutva's undivided India. The Hindu Rashtra stretches from Afghanistan to Myanmar via Tibet. While Sri Lanka, Nepal, Bangladesh and Pakistan have become part of the great Indian nation, the Hindu Rashtra. Gandhi asks Godse a crisp question to which, for once, Godse is seen groping for an answer. Do you even know the people who live in these countries? Godse's growing admiration for his rival takes a dramatic turn when he protects Gandhi from another Hindutva gunman's attempt on him. In the terrifying real world today, Godse has grown in stature, as a cult figure for Hindu nationalists. Between surviving the assassin's bullet and his imprisonment in Free India, Gandhi's characterization as a free-spirited do-gooder, on occasions resembling Maoist guerrillas fighting for tribal rights, throws light on many things that ail the impoverished masses in India today. Wajahat is a former Hindi professor from Jamia Millia Islamia, and has been a member of the Communist Party's literary club for years. His progressive views have seldom if ever abandoned his creative writing. One of his plays was staged in Pakistan and was very popular with audiences in India. Who Hasn't Seen Lahore Has Not Lived would be a loose translation of the critically acclaimed Urdu play with the partition as backdrop. In a sense, the Godse play is also rooted in partition. Godse's transformation was only in the movie though. In the terrifying real world today, he has grown in stature, as a cult figure for Hindu nationalists. See the election of Godse-worshipping Sadhvi Pragya, for example, accused in terror attacks targeting Muslims. Sadhvi was controversially given bail on health grounds, while paralyzed prisoners have struggled to get a sipping straw from the warders. The bail enabled Pragya to win the Lok Sabha election in 2019 from Bhopal. Another example of Godse's victory, a key accused in the Gandhi murder trial was V.D. Savarkar, charged as a plotter but free for want of clinching evidence. Demands are growing to posthumously confer on the founder of the Hindutva worldview, the Bharat Ratna,
India's highest civilian award. The Godse Gandhi movie has come under intense fire from some of Wajahat's friends who claim it gives the communal killer needless legitimacy. I didn't get that sense at all, and wondered why many of these friends saw no problem with Attenborough's Gandhi, in which Dalit icon Ambedkar didn't get a walk-on role. There are graphic scenes of partition violence at the start of the movie, which could be called terrifying. Thomas, another soul-searching movie on partition, had more gory violence, which rightly didn't invoke intellectual ire. Wajahat is an old friend, but that's hardly a reason for my liking the movie. As for Rajkumar Santoshi, one has admired him for making Lajja, Shame, an unusual feminist protest. Lajja featured a female team of Rekha, Mathuri Dixit and Manisha Koirala, each with powerful feminist roles. Santoshi has been accused of holding reactionary views bordering on the communal. Lajja questioned that. Dixit, a theatre actor in the movie, plays Sita, and her fiancé plays Ram. When the man doubts the child she was carrying was his, Dixit moves away from the script in the test by fire scene. She exhorts Ram to take the chastity test with her as both were away from each other. Did she not spurn Ravana and reduce him to a dead man by her rejection? Ram valiantly fought a half-dead man. As for Lakshman, he too inflicted his wrath on a woman. These are not regressive dialogues. They are rare and badly needed lines today, not any less than the Gandhi-Godse dialogue, creatively scripted by Asghar Wajahat to illustrate the signs of the times for Indian democracy. The writer is Dawn's correspondent based in Delhi. Naqvi@gmail.com. Published in Dawn, March 21, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@DawnVocabulary. नाथोराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में एक दुआया जलसे में गांधी जी का कत्ल किया था और इस जुर्म के लिए उन्हें फांसी दे दी गई थी। गोडसे ने गांधी को बार बार शिकस्त दी है, खास तौर पर 1984 में दिल्ली में, 1992 में अयोध्या में, 2002 में गुजरात में और 2014 में दिल्ली में। नीली, मुजफ्फरनगर, कुंधमाल, हाशिमपुरा में होने वाली दीगर लड़ाइयों में भी गांधी को बार बार कत्ल किया गया। लेकिन गांधी भी नाकाबिल तस्खीर हैं और शिकस्त मारे जाने के बावजूद लड़ाई जारी रखने के लिए वापस आते रहते हैं। असगर वजाहत ने 10 साल पहले एक ड्रामा लिखा था जिसमें गांधी गोडसे की गोलियों से बचाते हैं और आखिरकार बातचीत के जरिए इसे शिकस्त देने के लिए जिंदा रहते हैं। गांधी काम ड्रामे में गांधी अपनी गोलियों के जख्मों से सेहतयाब हो जाते हैं और गोडसे जेल चले जाते हैं। गांधी इन हौलनाक मजालिम के खिलाफ एक जंगजू बन जाते हैं जिनका सामना आजाद हिंदुस्तान में बेबस लोगों को करना पड़ता है। इसके लिए इसे जेल की सजा सुनाई जाती है और वो गोडसे के साथ इसी कोठरी में रखने का इंतखाब करता है। उनका मुकालमा वजाहत के ड्रामे का जौहर बनाता है। इसे हाल ही में एक फिल्म के तौर पर ढाला गया था। हिदायतकार राजकुमार संतोषी ने वजाहत के साथ स्क्रीन प्ले लिखा और इसे गांधी-गोडसे एक उदे का नाम दिया, जिसका तर्जुमा गोडसे और गांधी के दरमियान लड़ाई के तौर पर किया गया है। ये लड़ाई यकीनन ख्यालात की थी। अदाकार सभी गैर मरूफ चेहरे थे, हालांकि कुछ तजर्बाकार स्टेज तजर्बाकार थे। चुनमे मंडलेकर ने एक ताकतवर गोडसे बनाया, जिससे पठान टाइगर के किरदार रोबोट की तरह नजर आएंगे। मंडलेकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए, जहां ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे तजर्बाकार अदाकारों ने अपनी तरबियत हासिल की। ये जाहिर करता है मंडलेकर की लाइनें तेज हैं और उनकी जुड़ें कौम परस्ती से जड़ी हुई हैं। गोडसे का मजबूत किरदार शायद वही है जिसे वजाहत के कुछ दानिश्वर दोस्त नापसंद करते थे। फिल्म ने सियाह और सफेद रंग में विलन और हीरो का लेबल लगाने की रवायत से दूर जाने की कोशिश की है, जैसा कि हॉलीवुड की जंगी फिल्में जर्मन फौजियों के साथ करती हैं। फिर स्टीवन स्पीलबर्ग ने बुर्ज ऑफ स्पाइज में सोवियत जासूस का हीरो बनाया, इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया कि इंसानों में नकाइस हो सकते हैं। इसके अलावा दीपक उन्तानी को एक बेहतरीन गांधी का किरदार निभाने के लिए दिए गए मुकालमे भी जीत चुके हैं। इनमें से हर एक फातेह
इसकी धीमी शक्ल पठों वाले गोडसे के लिए एक बेहतरीन वरक बनाती है। मिसाल के तौर पर जेल की कोठरी में गोडसे ने हिंदुत्व के गैर मुनक़सम हिंदुस्तान अखंड भारत के अपने तस्वुर का नक्शा तैयार किया है। हिंदू राष्ट्र अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत के रास्ते म्यांमार तक फैला हुआ है, जबकि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान अजीम हिंदुस्तानी कौम हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बन चुके हैं। गांधी ने गोडसे से एक कड़वा सवाल पूछा, जिसका जवाब गोडसे को एक बार फिर ढूंढते हुए देखा जा सकता है। क्या तुम इन ममालिक में रहने वाले लोगों को जानते हो? गोडसे की अपने हरीफ के लिए बढ़ती हुई तारीफ इस वक्त ड्रामाई मोड़ लेती है जब वो गांधी को एक और हिंदुत्व बंदूक बरदार की इस पर हमला करने की कोशिश से बचाता है। आज की खौफनाक हकीकी दुनिया में गोडसे का कद हिंदू कौम परस्तों के लिए एक मजहबी शख्सियत के तौर पर बढ़ गया है। कातिल की गोली से बचने और आज़ाद हिंदुस्तान में कैद के दरमियान गांधी को एक आज़ाद मिजाज शख्स के तौर पर पेश करना, जो कभी कभी कबायली हुकूक के लिए लड़ने वाले मावनवाज गोरिल्ला से मिलता जुलता है, बहुत सी चीज़ों पर रोशनी डालता है जो आज हिंदुस्तान के गरीब अवाम को परेशान करती है। वजाहत जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक हिंदी प्रोफेसर हैं और बरसों से कम्युनिस्ट पार्टी के अदबी क्लब के रुकन हैं। उनके तरक्की पसंद ख्यालात ने शायद ही कभी उनकी तख्लीकी तहरीर को तर्क किया हो। उनका एक ड्रामा पाकिस्तान में स्टेज किया गया था और हिंदुस्तान में नाजरीन में बहुत मकबूल था। जिसने लाहौर नहीं देखा वो जिंदा नहीं रहा, तकसीम हिंद के पस मंजर में तनकीदी तौर पर सराहा जाने वाले उर्दू ड्रामे का ढीला सा तर्जमा होगा। एक लिहाज से गोडसे के ड्रामे की जुड़ें भी तकसीम से जड़ी हुई हैं। गोडसे की तब्दीली सिर्फ फिल्म में थी। आज की खौफनाक हकीकी दुनिया में वो हिंदू कौम परस्तों के लिए एक मजहबी शख्सियत के तौर पर कद बढ़ा है। मिसाल के तौर पर गोडसे की पूजा करने वाली साध्वी पिगिया का इंतखाब देखिए, जो मुसलमानों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दाना हमलों की मुल्जिम है। साध्वी को मुतनाज़ा तौर पर सेहत की बुनियाद पर जमानत दे दी गई थी, जबकि मफलूज कैदियों को वार्डर्स से भूसा हासिल करने के लिए जिदोजहद करनी पड़ रही है। इस जमानत ने पिगिया को भोपाल से में लोकसभा इंतखाब जीतने के काबिल बनाया। गोडसे की जीत की एक और मिसाल गांधी कत्ल मुकदमे में एक अहम मुल्जिम वी.डी. सावरकर थे, जिन पर साजिशकार के तौर पर इल्जाम लगाया गया था, लेकिन ठोस सबूतों की कमी की वजह से रहा कर दिया गया था। हिंदुत्व के आलमी नजरिए के बानी को बाद अज मर्ग भारत के सबसे बड़े सिविल अवार्ड भारत रत्न से नवाजे जाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। गोडसे गांधी फिल्म को वजाहत के कुछ दोस्तों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और उनका दावा है कि इससे फिरका वाराना कातिल को गैर जरूरी जवाज हासिल होता है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था और मैं हैरान था कि उनमें से बहुत से दोस्तों को एटनबरो की गांधी से कोई मसला क्यों नजर नहीं आया, जिसमें दलित आइकॉन अम्बेडकर को वाक आन रूल नहीं मिला। फिल्म के आगाज में तकसीम के तशद्दुद के ग्राफिक मनाजिर हैं, जिन्हें खौफनाक कहा जा सकता है। तकसीम हिंद पर रूह की तलाश करने वाली एक और फिल्म तुम इसमें ज्यादा खौफनाक तशद्दुद था, जिसने सही तौर पर दानिशवराना गुस्से को जन्म नहीं दिया। वजाहत मेरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन यह फिल्म को पसंद करने की शायद ही कोई वजह है। जहां तक राजकुमार संतोषी का ताल्लुक है, हर किसी ने लाजा शर्म को एक गैर मामूली फेमिनिस्ट एहतजाज बनाने के लिए उनकी तारीफ की है। लाजा में रेखा, माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला की एक खातून टीम शामिल थी, जिनमें से हर एक ने ताकतवर फेमिनिस्ट किरदार अदा किए थे। संतोष पर फिरका वाराना बुनियादों पर रजती ख्यालात रखने का इल्जाम लगाया गया है। लाजा ने इस पर सवाल उठाया। फिल्म में थिएटर अदाकार दीक्षित ने सीता का किरदार अदा किया है और उनके मंगेतर ने राम का किरदार अदा किया है। जब इस शख्स को शक होता है कि वो जिस बच्चे को उठा रही है वो इसका है, तो दुष्ट टेस्ट बाय फायर सीन में स्क्रिप्ट से दूर चली जाती है। वो राम को तलकीन करती है कि वो इसके साथ पाकीज़गी का इम्तिहान ले, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर थे। क्या उसने रावण को झुटलाया नहीं था और उसके इनकार से उसे मुर्दा आदमी में तब्दील नहीं किया था? राम ने बहादुरी से एक आधे मुर्दा शख्स का मुकाबला किया। जहां तक लक्ष्मण का ताल्लुक है, तो इसने भी एक औरत पर अपना गजब मुसल्लत किया। ये रजत पसंद मुकालमे नहीं है। ये लाइनें आज नायाब हैं और उनकी अशद ज़रूरत है, गांधी-गोडसे मुकालमे से कम नहीं, जिसे असगर वजाहत ने तख्लीकी तौर पर तहरीर किया है ताकि हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए वक्त की निशानियों को वाज़े किया जा सके।
मजमून निगार दहली में मुकीम दान के नामा निगार हैं जो gmail.com अखज़ शदा बतारीख 21 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.